So we are live. Am I audible? Hello, guys. Yesterday we were doing TCS and QT preparation. So, guys, if you're watching from the start, today I appeared in TCS and QT, and I'm streaming just to share my experience in today's exam. I'm so tired, I will be ending the live stream in about 20-30 minutes only after sharing my experience and the questions that were asked in today's first shift. I was I got my exam scheduled for the first shift. Okay. ब्रो एमसीए के लिए एग्जाम होता है क्या ब्रो? पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल आई गेस। एमसीए के लिए भी एमसीए वाले भी एलिजिबल होते हैं, दे कैन अपीयर इन टीसीएस एंड क्यूटी। एंड लेट्स टॉक अबाउट today's question in aptitude. Yesterday we were preparing for aptitude, thinking that aptitude is going to be hard, but in my case, aptitude was not that hard. It was easier, and I could solve almost all the questions except the difficult ones. Few were there. Only few questions were difficult in the aptitude part, and reasoning was really very easy, and verbal ability was also like decent. It was not that very difficult. And the main trick was with okay, you mean एमसीए के लिए सीमेट एग्जाम? ओके, हाँ, कुछ एग्जाम्स तो होते हैं लाइक यू कैन गेट इनटू एनआईटीज. वन ऑफ माय फ्रेंड like is doing MCA from NIT Bhopal, and he appeared in some exam. I don't really know the name, which exam it is. निमसेट होता है वो, NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, निमसेट. नाम तो सुना था बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट कि ये एमसीए के लिए होता है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, and the surprising part was the coding question in today's session, today's shift. It was really annoying. जो TCS का कंपाइलर है ना, वो एक तो एकदम जस्ट नोटपैड के जैसा है, उसका कोई कंपाइलर है ही नहीं. और उसके बाद में जो क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करते हैं टीसीएस वाले, आई डोंट नो व्हाट वीड दे टेक while preparing the questions. Let me show you the question which was asked in today's shift in which I was appearing. Uh, Karthik, presentation, please speak loudly. My voice is not loud.
Bro, I'm tired today. Like I've not sleep or taken rest from 5:30 in the morning. क्या मेरी टंग स्लिप हो रही है यार बहुत ज्यादा. Hmm, GPT. So where is that question? For those जिनका एग्जाम कल है, bro, I will be continuing daily DSA problems. Virat Kohli is asking, bro, what after 455 challenge? I will continue daily DSA problems. Like, matlab, I will try to solve at least one DSA problem every single day. And along with that, I will try to like add some session in which I will be learning web development or Java full stack development. And उसमें भी मैं बस पढ़ रहा हूँगा, सीख रहा हूँगा, जो भी सीख रहा हूँगा मैं उसको लाइव डॉक्यूमेंट करूँगा. Let me show you. This was the question. Hmm, बोला तो था कल के कंपाइलर ही बकवास है इनका. सीरियसली मतलब ठीक है, कंपाइलर को भी एक एक्सेप्शन ले लेते हैं अगर, बट उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर इनने बनाया, जो क्वेश्चन इनने दिया वो भी बकवास था. ब्रो, इट वाज द प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन. तेजस्वी ब्रो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारी गलती नहीं है उसमें. मैं भी मैं भी ब्लैंक आउट हो गया था इनिशियली. आई वाज थिंकिंग कि एम आई सो डम कि मुझसे एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कोडिंग का. एंड yesterday आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड थिंकिंग कि कोडिंग तो मैं कर लूंगा, आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है. बट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन, दैट वाज इजी, दैट वाज मार्क्ड एज इजी, बट उसका कोई पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं. मतलब लेट मी शो यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. ब्रो, दो टेस्ट केस पास हुए जो भी पब्लिक थे, और आई जस्ट, मतलब मैंने जस्ट ट्रिक किया उसको. हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ. TCS लास्ट नाइट. हाँ, वन क्वेश्चन पैलिंड्रोम का था, ये कब हुआ? किस शिफ्ट में हुआ ब्रो तुम्हारा? हाँ, भाई एप्टीट्यूड इजी था तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा. रायोगा इज हियर. हेलो रायोगा, हाउ आर यू? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट. तुम्हारा सेकंड शिफ्ट था तो आई हैव नो आइडिया. मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरा तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट थोड़ा इजी था, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी. फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा मॉडरेट था, मतलब एप्टीट्यूड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. कोडिंग क्वेश्चन asked in my shift. पेस्ट हो जा ब्रो. ये रहा. तो जितना मुझे याद था ना वो मैंने आके सीधा चैट जीपीटी को दे दिया था कि ये क्या क्वेश्चन है, मुझे समझा भाई. अ, जो टीसीएस का कंपाइलर था जिसमें क्वेश्चन गिवन है, उसमें बस बहुत ही लाइक लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस गिवन थे कि लाइक देयर इज सम क्रिया जो हम लाइक परफॉर्म कर सकते हैं, और वी आर स्टोरिंग दोज क्रियाज इन अ सर्कुलर एरे, and when we perform a kriya, the neighboring kriyas get vanished. Okay, and also the kriya which we are performing also gets vanished, and we need to calculate the maximum sum of kriyas that can be performed without getting vanished. और keeping in mind के ये vanish होने वाला जो
रूल है वो भी फॉलो हो और जो सर्कुलर एरे का कॉन्सेप्ट है वो भी फॉलो हो। बट जो टेस्ट केसेस उनने दिए और मतलब जो एग्जांपल्स गिवन थे वो भी क्लियरली मेंशन नहीं थे कि लाइक हो क्या रहा है एक्चुअली। यस ब्रो, कार्तिक प्रेजेंटेशन इज सिंग विदाउट कोडिंग डिजिटल का कोई चांस नहीं है। यस ब्रो, नो चांस। मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट टफ लगा और सारा इजी था। हाँ, ऑलमोस्ट सारा इजी। अच्छा, कोडिंग भी होगा? ना, एक भी नहीं हुआ पूरा। ये इजी क्वेश्चन था। तेजस तेजस्वी ब्रो, तुम्हारा सेकंड शिफ्ट में कोडिंग क्वेश्चन क्या आए थे? पैलिंड्रोम और यस ब्रो, वी कैन गिव अगेन बट इट विल बी ऑफ कैंपस और वो थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड अभी मैं ये प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या था कि कुछ तो क्रिया है और लाइक वी आर गिवन टू इनपुट्स। इनपुट वन, मतलब जो फर्स्ट लाइन में इनपुट है, इनपुट वन इज इक्वल्स टू एम, विच इज मतलब वैल्यू ऑफ एम विच इज इक्वल्स टू 4। ये जो सैंपल एग्जांपल था वो मैं बता रहा हूँ। और इनपुट टू था कुछ तो लाइक एन, वैल्यू ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू 10। और इसमें जो एम और एन है ना, एम इज द नंबर ऑफ क्रियाज विच कैन बी वेनिस्ड। ओके। उप्स, ये तो देख ही नहीं रहा है। वीएस कोड को बंद करो। ये रहा। थैंक यू बताने के लिए। ये प्रॉब्लम था एक्चुअली। हाँ, वही एडवांस्ड एडवांस कोडिंग वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी डुएबल था, क्वेश्चंस हो सकते थे, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली गिवन नहीं थे। लाइक अभी मैं बताता हूँ, मुझे जितना याद आ रहा है अभी। और मैं मुझे भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये थोड़ा मतलब यहाँ घर आके पता चला कि ये हाउस रॉबर प्रॉब्लम के जैसा है थोड़ा। बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि क्वेश्चन जो टीसीएस के सेंटर पे क्या बोल रहा था। तो जो टीसीएस का एग्जाम था उसमें क्या गिवन था कि देर आर सम क्रियाज विच वी कैन परफॉर्म, इट इज लाइक योगा। एंड देर इज अ सेट ऑफ लाइक क्रियाज इन द एरे, इन अ सर्कुलर एरे। ठीक है। और देर आर टू रूल्स। रूल वन के if rule 1 was that कि if any kriya is performed, then it will get vanished, it will get vanished, and its neighbor will also get vanished. That means if five, मतलब एक और क्या कॉन्टेक्स्ट गिवन था। इसके पहले ये गिवन था कि m is the number of which kriyas which can be vanished, and n is the total number of kriyas, total number टोटल क्रियास। और जो क्रिया होंगी ना, क्रिया कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 1 to n। यश तिवारी सिंह, ये बताओ भाई मैं क्या करके जाऊं कल के लिए ब्रो? रिवाइज हाउ टू टेक इनपुट्स इन लाइक टीसीएस लाइक कंपाइलर के जो कोड फोर्सेस और हैकर आर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो थोड़े बहुत, एरे और स्ट्रिंग के। एरे का इनपुट कैसे लेते हैं, अगर लाइक कोई एरे वाला क्वेश्चन है
तो तुम्हें इनपुट मिलेगा एज अ स्ट्रिंग, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, उसके कुछ क्वेश्चंस करके जाओ। और बस कोडिंग वाले क्वेश्चन थोड़े रिवाइज कर लो। एप्टीट्यूड वाला पार्ट तुम ना इवेंचुअली कर लोगे, तुमने जो भी प्रिपरेशन की होगी उसके बेसिस पे कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट आई थिंक यू शुड टारगेट फॉर द एडवांस कोडिंग सेक्शन, क्योंकि वही है जो यू मतलब जो तुम्हें अच्छा पैकेज दिलाएगा। 3.5 तो सबका लग ही जाएगा ऑल दो, जो कोई एप्टीट्यूड क्लियर करेगा। और एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। मैं क्या बता रहा था, इसका एग्जाम्पल गिवन था कि इफ m इज इक्वल्स टू 4 गिवन है इनपुट में, और n इज इक्वल्स टू 10 गिवन है, तो इसका आउटपुट जो टीसीएस के हिसाब से होना चाहिए वो था 120। अब इसका लॉजिक समझ नहीं आया। पहले ये बोलते हैं कि अगर n इज द टोटल नंबर ऑफ क्रियाज, then they will be represented as 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 7 8 9 एंड 10। तो ऐसे ये क्रियाज होंगी, और ये ना सर्कुलर एरे में है, कि दैट मीन्स अगर 10 को वैनिश करेंगे या फिर परफॉर्म करेंगे तो 9 और 1 भी वैनिश हो जाएगी। राइट। अब उसके हिसाब से अगर मैं मतलब मैं जो लॉजिक लगा रहा था कि सपोज दीज आर द 10 क्रियाज which are listed in a circular array, and if we are performing number 2, then it will get added to the sum, like मतलब we had to find the maximum sum after performing all the operations and making sure कि कोई भी क्रिया वैनिश ही ना हो। मतलब पहले तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि अगर किसी भी क्रिया को परफॉर्म करेंगे तो इट विल गेट वैनिश्ड, लेकिन इन्हें आउटपुट चाहिए ऐसा जिसमें क्रिया ही वैनिश ना हो। तो ये ना जाने कैसे होना था। उसके बाद में जो एक्चुअली मतलब मैंने घर आके एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस मत करो अब। लाइक जितना कर लिया उतना काफ़ी है। फोकस मोर ऑन लाइक बी ऐसे प्रॉब्लम्स, लाइक मतलब जो पीवाई की प्रॉब्लम्स होंगे ना, टीसीएस एनक्यूटी वाले, वो उनको करने का कोशिश करो। इसको पूरा ही कॉपी करना होगा। दिस इज द सॉल्यूशन नाउ। ये तो सिलेक्शन के लिए कल मिलता हूँ फिर शाम को लाइव स्ट्रीम पे। ओके। यश ब्रो, सी यू देन। If you guys have any question or doubt, you can ask me. Otherwise, I will end the stream in few minutes. This was it. I just wanted to be consistent. That is why I started the stream. कुछ तो stream करना था आज। And ये question का solution share करके I will end the stream. And I don't know why ये copy नहीं हो रहा। Hmm, here it is. So this was the problem. You have n kriyas in a circular array labeled as 1 to n. That means n is given. So we have created a circular array in which
we have labeled the index of the array from 1 to n, and when you perform a kriya at position I, it vanishes along with its neighbor. That means if you are performing a kriya at ith position, its I minus 1 and I plus 1 position kriya will also get vanished. And since the array is circular, if you perform kriya 9 मतलब लास्ट क्रिया को परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट क्रिया भी वैनिश हो जाएगी, राइट? तो these are the two things that were given in the question, and we need to maximize the sum of kriyas performed such that no two selected kriyas are adjacent. के मतलब दो क्रिया को परफॉर्म करना है सच दैट के वो एक दूसरे के नेबर नहीं होने चाहिए और उनका सम करना है। तो जो जो क्रिया परफॉर्म होती जाएगी वो सम में ऐड होता जाएगा और वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट। बट टीसीएस के कोड में मतलब क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई थी कि सच दैट क्रियाज डज नॉट वैनिश। पहले रूल में गिवन था कि अगर तुम क्रिया को परफॉर्म करोगे तो इट विल डेफिनेटली गेट वैनिश्ड, बट आउटपुट इनको चाहिए कि परफॉर्म करो क्रिया को बट इट शुड नॉट गेट वैनिश्ड। आई डोंट नो हाउ दे वांटेड us to solve the problem, but after getting home, reaching home, I asked perplexity to like come up with the exact question which they were trying to ask. So it came up with something like house robber problem number 2. So here's the solution that it provided me using dynamic programming. So अगर it is the exact question that they were trying to ask, तो imagine कि easy question dynamic programming से पूछा था उन्होंने। Let us solve that house robber problem, and after solving that problem, I will end this soon. Here we are. House robber 2 problem. You're a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. All houses at this place are arranged in a circle. That means the first house is the neighbor of the last one. Meanwhile, adjacent houses have a security system connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. Given an integer array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. So it seems simple, but it is not. Since house 1 and house n are adjacent, they cannot be robbed together. Therefore, the problem becomes to rob either house 1 n minus 1 or house 2 comma n. Depending on which choice offer more money, now problem has degenerated to the house robber which is already being solved. और house robber problem क्या है? Your professional robber planning to rob. Okay, that is what I was trying to solve.
This is similar question that was asked in today's first shift, and let's try to solve it. You're a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is the adjacent houses having security system connected, and it will automatically contact the police if two houses were broken on the same night. So it would be solved using dynamic programming जो मुझे नहीं आती अच्छे से. Let's still try. If num is empty, nums dot len is equals to 0, then we will return 0. Okay. After that, int n is equals to nums dot len, and if nums of sorry n is equals to 1, we will return the first element, nums of 0. After that, we can create a dp. dp is equals to new int and dp of 0 is equals to nums of 0. After that, dp of 1 is equals to math dot max of nums at 0 comma nums at 1.
Okay, it can dynamic programming easy problem. ECS NQT के हिसाब से डायनामिक प्रोग्रामिंग इज इजी. ये सॉल्यूशन है and this was it in the experience and I'm tired. Today I'm taking break and there's no DSA coding session for today. We will continue from tomorrow and we'll start learning Java full stack development on live streams also. So stay tuned for that. Bye bye. Thanks for joining if you joined. This was it for today. Bye.